Title: The Raincatcher's Apprentice. बारिश पकड़ने वाले की शागिर्द. In the highlands of Theralis, where the sky seemed stitched with clouds and the wind carried tales from centuries past, lived a girl named Eleanor. थेरिलस के पहाड़ी इलाकों में, जहां आसमान बादलों से जुड़ा हुआ लगता और हवा सदियों पुरानी कहानियां सुनाती, एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलनोर था. She had always been fascinated by the sky, not the stars, like astronomers, nor the sun, like farmers, but the rain itself. वो हमेशा आसमान से महजूज होती थी, ना के सितारों से, जैसे माहिर फल्कियात होते हैं, और ना सूरज से, जैसे किसान होते हैं, बल्कि बारिश से. While others ran for shelter during a storm, Eleanor would stand still, letting each drop soak her skin. जब दूसरे लोग तूफान में छुपने के लिए भागते, एलनोर वहीं खड़ी रहती और बारिश की हर बूंद को अपने जिस्म पर जज्ब होने देती. Her village often mocked her for her obsession. "You'll catch your death," they warned. But she smiled, knowing they didn't understand. उसका गांव अक्सर इसकी दीवानगी का मजाक उड़ाता. तुम बीमार पड़ जाओगी, वो कहते, मगर वो मुस्कुरा देती क्योंकि वो जानती थी कि वो नहीं समझते. On her 15th birthday, Eleanor's grandmother gave her a strange gift, a glass orb embedded with copper threads and inscribed with ancient runes. अपनी 15वीं सालगिरह पर एलनोर की दादी ने इसे एक अजीब सा तहफा दिया, एक शीशे का गोला जिसमें तांबे की तारें जमी हुई थीं और इस पर कदीम निशानात कंदा थे. It once belonged to a rain catcher, her grandmother whispered. They were keepers of balance before the world forgot. ये कभी एक बारिश पकड़ने वाले की मुल्कियत था, इसकी दादी ने सरगोशी की. वो तवाज़न कायम रखने वाले थे जब दुनिया ने उन्हें भला दिया. The orb pulsed in Eleanor's hands when rain touched it. जब बारिश की बूंदें इस पर गिरें तो वो गोला एलनोर के हाथों में धड़कने लगा. That night she dreamt of a silver tower hidden among the cliffs, where a voice whispered, "Find the reservoir. Learn the ways." इस रात इसने एक चांदी के मीनार का ख्वाब देखा जो चट्टानों में छुपा हुआ था, और वहां एक आवाज ने सरगोशी की, आबी ज़ख़ीरा तलाश करो, रास्ते सीखो. Determined, Eleanor set off at dawn. पुरअज़्म होकर एलनोर सुबह सवेरे रवाना हो गई. Her path took her through moss-covered ruins, across rope bridges swaying over fog-choked ravines, and into forests where trees seemed to breathe. इसका रास्ता इसे काई से ढकी खंडरात, धन से भरे गहरे दरों पर झूलते रसी के पलों, और ऐसे जंगलात से ले गया जहां दरख्त सांस लेते महसूस होते थे. She met creatures who remembered the rain catchers, a one-eyed raven who spoke in riddles, and a blind fox that guided her at night. इसे ऐसे मखलूक मिले जिन्हें बारिश पकड़ने वाले याद थे. एक एक आंख वाला कुआ जो पहेलियों में बात करता था, और एक अंधी लोमड़ी जो रात को उसकी रहनुमाई करती थी. Each offered a piece of knowledge in exchange for something precious, her fear, her anger, her doubt. हर एक ने बदले में इसे कुछ सिखाया, इसके खौफ, गुस्से और शक के बदले. At last, Eleanor found the tower from her dream, half buried in a cliffside. आखिरकार एलनोर को अपने ख्वाबों का वो मीनार मिल गया जो एक चट्टान में आधा दफन था. Inside, spiraling stairs led to a chamber where water floated in midair. अंदर घूमती हुई सीढ़ियां एक कमरे की तरफ जाते जहां पानी हुआ में मालक था. The orb glowed wildly as she entered. जैसे ही वो अंदर गई, गोला तेजी से चमकने लगा. From the water emerged the spirit of the last rain catcher. पानी से आखिरी बारिश पकड़ने वाले की रूह जाहिर हुई. You have passed the unseen trials, it said. But are you willing to give what is most dear? तुमने छुपे हुए इम्तिहान पास कर ली हैं, उसने कहा. मगर क्या तुम सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को तैयार हो? What must I give? Eleanor asked. मुझे क्या देना होगा? एलनोर ने पूछा. Your voice, the spirit replied. To speak is to control, to listen is to understand. The rain needs listeners. तुम्हारी आवाज, रूह ने जवाब दिया. बोलना कंट्रोल करना है, सुनना समझना है. बारिश को सुनने वालों की जरूरत है. Trembling, Eleanor nodded. कानपत्ती हुई, एलनोर ने सर हिला दिया. Her voice vanished like mist, but in its place she gained something greater, understanding. इसकी आवाज धंध की तरह गायब हो गई.
मगर इसकी जगह इसे एक अजीम चीज़ मिली, समझ। Now she could hear the language of rain, the murmurs of clouds, the sighs of rivers. अब वो बारिश की ज़बान, बादलों की सरगोशियाँ और दरियाओं की आहें सुन सकती थी. Years later, Theralis began to suffer droughts and storms. कई साल बाद, Theralis खुश्क साली और तूफानों का शिकार होने लगा. But wherever Eleanor walked, balance returned. मगर जहाँ भी एलेनोर चलती, तवाज़ुन वापस आ जाता. She became known not for her voice, but for her presence. लोग इसे इसकी आवाज़ नहीं, बल्कि इसकी मौजूदगी के लिए पहचानने लगे. People would say, the rain follows her. Never knowing the truth, she no longer followed the rain. It listened to her. लोग कहते, बारिश इसके पीछे आती है, मगर वो हकीकत नहीं जानते थे. अब वो बारिश के पीछे नहीं जाती थी, बल्कि बारिश इसकी सुनती थी. And so the Raincatcher's apprentice became the last of her kind. और यूं बारिश पकड़ने वाले की शागिर्द अपनी नस्ल की आखिरी बन गई. Until the next storm chose another. यहाँ तक कि अगला तूफान किसी और को चुन ले. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the highlands of Theralis, where the sky seemed stitched with clouds and the wind carried tales from centuries past, lived a girl named Eleanor. She had always been fascinated by the sky, not the stars like astronomers, nor the sun like farmers, but the rain itself. While others ran for shelter during a storm, Eleanor would stand still, letting each drop soak her skin. Her village often mocked her for her obsession. "You'll catch your death," they warned, but she smiled, knowing they didn't understand. On her 15th birthday, Eleanor's grandmother gave her a strange gift, a glass orb embedded with copper threads and inscribed with ancient runes. "It once belonged to a rain catcher," her grandmother whispered. "They were keepers of balance, before the world forgot." The orb pulsed in Eleanor's hands when rain touched it. That night, she dreamt of a silver tower hidden among the cliffs where a voice whispered, "Find the reservoir. Learn the ways." Determined, Eleanor set off at dawn. Her path took her through moss-covered ruins, across rope bridges swaying over fog-choked ravines, and into forests where trees seemed to breathe. She met creatures who remembered the Raincatchers, a one-eyed raven who spoke in riddles, and a blind fox that guided her at night. Each offered a piece of knowledge in exchange for something precious: her fear, her anger, her doubt. At last, Eleanor found the tower from her dream, half buried in a cliffside. Inside, spiraling stairs led to a chamber where water floated in midair. The orb glowed wildly as she entered. From the water emerged the spirit of the last Raincatcher. "You have passed the unseen trials," it said. "But are you willing to give what is most dear?" "What must I give?" Eleanor asked. "Your voice," the spirit replied. "To speak is to control. To listen is to understand. The rain needs listeners." Trembling, Eleanor nodded. Her voice vanished like mist, but in its place, she gained something greater: understanding. Now she could hear the language of rain, the murmurs of clouds, the sighs of rivers. Years later, Theralis began to suffer droughts and storms. But wherever Eleanor walked, balance returned. She became known not for her voice, but for her presence. People would say, the rain follows her. Never knowing the truth, she no longer followed the rain. It listened to her. And so the Raincatcher's apprentice became the last of her kind. Until the next storm chose another. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. हमारी साथी बने रहने का बहुत शुक्रिया. अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.